बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं सब शब्दों के साथ में विषय के प्रवेश कराने के लिए मैं आदरणीय मैडम कामिनी धीमान जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने पहले कुछ अपने आशीर्वचन दे, विषय प्रवेश कराएं और उसके बाद अपने गेस्ट स्पीकर्स को सादर आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। ओवर टू मैडम कामिनी। थैंक यू अग्निहोत्री सर। नमस्कार पवन जी, बहुत बहुत बधाई आपको। नमस्कार टू निशान जी एंड बोथ द स्पीकर्स वैशाली एंड मैडम रमा देवी, along with them all the participants who have joined over here and are now joining over here. We have selected today the topic is pelvic inflammatory disease, a very common condition we see in our OPD. Patient generally comes to us with the report. And sonologists generally write when there is fluid in pouch of Douglas, they write PID. There is pelvic inflammatory disease. But what can cause the PID and what actually the PID is the matter of concern when we are sitting in the OPD. Pelvis is having lot many structures, either fallopian tube, either uterus, either uh, peritoneum, others lot many. Itis means inflammation. Peritonitis, salpingitis, endometritis, lot many itis we see in this pelvic inflammatory disease, and result is also sometimes hydrosalpinx or infertility. Uh, this is the later we can say that picture of this PID. But how PID is very common and why it is common? When there is any manipulation inside the pelvic cavity, then only it occurs. Commonly nowadays, IUD is common, and manipulation like biopsy is common, hysteroscopy is common. Patients are going to have diagnostic procedures through the cervix into the uterine cavity, and those procedures may uh, enter the infection in the pelvis. So that can cause the inflammation, and that results into pelvic inflammatory disease. And nowadays, a common practice is of use of menstrual cup. Although there are not very evidences of that कि menstrual cup use करा है तो उसको PID होगा, ऐसा जरूरी नहीं है. बट समटाइम्स अगर सही से यूज नहीं किया है तो उसकी वजह से भी लड़कियां आती कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है. PID क्रॉनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है. जब एक्यूट होता है तो पेशेंट को सीवियर पेन रहता है, फीवर रहता है, इस टाइप की प्रॉब्लम लेकर आती है पेशेंट. और क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय से पेशेंट को कहीं इंफ्लामेटरी कंडीशंस रही है तो उस वजह से डिस्चार्ज वगैरह की प्रॉब्लम लेकर आती है, तब PID का डायग्नोसिस होता है. तो लॉट मेनी वेरिएबल फीचर्स आर देयर इन दिस कंडीशन. वास्ट फीचर्स, वास्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, वास्ट इन्फेक्शंस. बहुत बड़ा टॉपिक है दिस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, एंड उसका रिजल्ट भी बहुत सारे हैं कि इसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स पेशेंट्स फेस करती है. बट मोस्टली 66% अगर हम देखते हैं तो फीमेल्स जो है लेस देन 30 ईयर्स जो जिनको होता है PID, उनमें ये मिलता है. उसके बाद भी मिल सकता है, बट व्हेन एक्टिव रिप्रोडक्टिव स्टेज है या एक्टिव सेक्सुअली एक्टिव जब है उस समय ज्यादातर इसको होने के चांसेस रहते हैं PID को. और इसको आयुर्वेद में जो हम बोलते हैं कि परिप्लुता, परि मतलब चारों तरफ से उपप्लुत हुआ है. इन्फेक्शन सब जगह फैल सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे तो उसको परिप्लुता योनि व्यापत कहा है. बाकी हमारे दोनों स्पीकर्स इस पे प्रकाश डालेंगे, एंड देन अगर क्वेश्चंस होंगे देन वी विल डिस्कस इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. So first of all, I would like to invite Dr. Vaishali Parmar. He is assistant professor in Vadodara, Gujarat. Over to you, Dr. Vaishali. Thank you, ma'am. A very good evening to all of you, and namaste. First of all, I would like to thank Dr. Kamini Dhiman ma'am, Dr. Pawan Kumar Sharma sir, for giving me such beautiful opportunity to present over here. Actually, this is very first time for me as faculty. Till date, I was presenting as student case study or anything, but such a huge topic, PIDs, we all know that. I will try my best, and without much delay, I will directly jump into presentation. So, shall I start, ma'am? Yeah, sure. You can share your presentation. Okay.
So we all know that pelvic inflammatory disease is not a single particular entity, Dr. Vaishali, and it is it not yet shared. okay. Yeah, not yet shared. You select the screen. Yeah, yes. Yes, it's visible now. It's fine now. It's fine. Okay. Sorry for inconvenience. Am I audible? Yeah, audible. Very nicely audible. Okay. So we all know that PID is not a single particular entity. It is a broad spectrum of disease. And जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो विमेन है वो फैमिली, सोसाइटी, कल्चर है हमारा, जो नेशन है उसकी सेंटर है. अगर कुछ भी जो विमेन को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब उसकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है, देन डेफिनेटली इट विल कंसर्न टू society and family also. And PID is a major concern of that. It is a public health issue, especially in our developing countries, because of its high prevalence, economic and social implications. होता यूं है कि PID के delayed management की वजह से it may result in a higher prevalence of miscarriage, chronic pelvic pain, sexually transmitted disease, and long-term reproductive disability due to its recurrence. So यहाँ पे पिक्चर क्लियर है कि why it is need to discuss about PID, because we have to prevent it as well as to diagnose it on an early basis and to treatment it precisely. So and epidemiology में अगर देखें हम तो जो 85% ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब वो सडनली डिस्कनेक्ट हो गया है. हेलो. Okay, you again share. Is it मैम? नहीं, अभी नहीं आया है. Is my PPT is visible? Not visible. Certainly. पता नहीं क्या इशू आ रहा है. वैशाली, ये आपने दो डिवाइस तो नहीं चालू कर रखी हैं? अक्सर ये होता है कि इसमें ज्यादा डाटा खींचने लगता है या नेट की प्रॉब्लम होती है. आप एक डिवाइस से प्रेजेंटेशन दीजिए, मे बी मोबाइल इटसेल्फ बहुत इजी गोइंग हो जाता है. और नहीं तो एक बार आउट होके फिर एंट्री करिए. स्पीच अपने सर एक ही कनेक्शन device पे, तो कनेक्शन चेक करिए ना, कहाँ पर एक जो सेकेंड. इंटरनेट के यहाँ पर आपका केबल भरा है उनको चेक करिए. नेटवर्क इशू है शायद. हाँ. ओके. I have shared. यस. मैंने शेयर किया है वैशाली. ओके मैम. हाँ. बट इसको फुल स्क्रीन में नहीं हो पाएगा शायद. मेरे उसमें पट्टी से आ गई ऊपर. एक मिनट मैम, मैं अदर पार्टिसिपेंट को शेयर करती हूँ. वन ऑफ द Should I stop share? Yes, ma'am. I have sent it to Dr. Jhalpa Patel.
Okay. by Okay. one Okay. of my senior. I have to share. Ma'am, can you please share it? There is something issue. Okay. 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 I have started. Okay. Is it visible? Okay, yeah, ma'am. Yeah, it is Yeah, visible. but it is not able to have full screen. It will be okay. Okay, we'll go with this. Okay, ma'am. Yes, it will be okay. Yeah. So, 2/3 ऑफ द women है, वो 25 से लेस देन ऑफ एज की होती है, और 1/3 है वो 30 और 30 से मोर होती है ना। अगर हम देखें कि जो रूटीन डेली गायनिक प्रैक्टिस में हमें जो गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ योनिव्यापत की हेडिंग अंदर आते हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो या फिर इनफर्टिलिटी हो, या वाइट डिस्चार्ज हो। नेक्स्ट स्लाइड। So first of all, we would understand that what is Yoni-Vyapad. Yoni-Vyapad is a Vyapad of Yoni. It is made up of two words, Yoni and Vyapad. Yoni, where the amalgamation of Shukra and Shoni take place. And Vyapad means something that should not be happen, other than something normal. So, जो परिप्लुता योनि व्यापद है, it is one of that 20 योनि व्यापद. एंड यूनिव्यापद को ब्रॉडली देखे तो सम यूनिव्यापद आर रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, सम है वो पेन रिलेटेड है, सम है वो डिस्चार्ज रिलेटेड है, बट जो परिप्लुता यूनिव्यापद है वो पेन एंड डिस्चार्ज दोनों के रिलेटेड है। सो परिप्लुता यूनिव्यापद, परि, it is made up of two words, pari and pluta. Pari means, as ma'am has said, that pari means from all around, and प्लूत मतलब योनि प्लूत होती है। जो योनि में वायु की अनुलोम गति होनी चाहिए उसके जगह वो प्रतिलोम होते हैं, दैट्स मीन कि वो प्लूत हो जाती है एंड पेन क्रिएट होता है। अगर महर्षि चरक के अकॉर्डिंग देखें तो वात एंड पित्त प्रधानश बोला है महर्षि चरक ने, एंड महर्षि सुश्रुत ने ओनली वात प्रधानश बोला है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अगेन नेक्स्ट। अगर हम निदान की बात करें, नेक्स्ट मैम। It's okay or next? नेक्स्ट नेक्स्ट ओके। अगर हम निदान की बात करें तो जो सामान्य निदान है, दैट इज मिथ्या उपचार, प्रदुष्टार्थ, बीज दोष एंड देव प्रकोप, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक निदान दिए हैं। महर्षि ने एक पर्टिकुलर निदान दिया है, दैट इज पित्तलायन ड्रुसम वार्षिक शवथु उद्गार धारणात्, कि जो पित्तल स्त्री है, मतलब पित्तल प्रकृति की स्त्री है, वो ड्रुसमवास है, मतलब ड्यूरिंग क्वाइटस एक्ट अगर शवथु और उद्गार जो वेग है उसको धारण करती है, तब जाके ये परिप्लुता योनि व्यापद होते हैं, अलोंग विथ ये जो सामान्य निदान है। हम जो परिप्लुता योनि व्यापद है उसका रिजेंबल्स है वो पीआईडी से करते हैं, और मेनली जो परिप्लुता है उसमें कॉमन एंटिटी देखने को मिलती है शोथ। तो जो शोथ के निदान है वो भी इसके स्पेसिफिक निदान है, जैसे कि विषम प्रसूति होना, गर्भपातन, प्रजातना मिथ्या उपचार, भ्रूष मैथुन, तो ये कुछ स्पेसिफिक विशेष निदान है। और मिथ्या उपचार में, मिथ्या आचार में हम देखें तो मिथ्या आहार प्लस विहार, जो आहार है मिथ्या आहार, महर्षि वाग्भट ने एक दुष्ट भोजन करके पर्टिकुलर निदान दिया है योनि व्यापद के लिए। और दुष्ट जो भोजन है उसमें बोला है कि पुति, क्लीन, उष्णकृत, कृमि दुष्ट भोजन। तो अगर हम अभी के मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर इसको कंसिडर करें तो जो स्टेल फूड है, ज्यादा प्रिजर्वेटिव वाले फूड है, या फिर प्रोसेस्ड फूड है, तो जैसे कि चीज है, ये मैदे वाली जो आइटम्स है, वो सारे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और अगर बिहार के उसमें सोचे तो वेग विधारण है, ड्यूरिंग क्वाइटस वेग विधारण है, एक्सेसिव क्वाइटस है, एक्सेसिव स्ट्रेस होता है अभी वर्कलोड की वजह से,
फिर आतप सेवन है, एक्सेसिव एक्सरसाइज है, बहुत सारे विहार इसको मतलब रिलेट करते हैं योनि व्यापक को उत्पन्न करने में। नेक्स्ट मैम। महर्षि ने एक पर्टिकुलर एंटिटी बोला है कि वेग धारण की वजह से परिप्लुता होता है। उसमें तो दो ही क्षवत्व उद्गार वेग धारण बोले हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो विमेन है उसको डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ काम की वजह से या उसके इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से उसको डेली हैबिट रहती है जो अदर अधारणीय वेग है उसको धारण करने की। तो वो क्रिया है, जैसे कि जो नेचुरल अर्जीज है हमारे, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो हैंडल करते हैं। अगर सब हम वेग है वो सप्रेस करते हैं तो इट विल हैम्पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड इट विल सप्रेस द इम्यून सिस्टम, which ultimately lead to activation of chronic inflammatory mediators and that will lead a chronic inflammation। तो हम ये देख सकते हैं कि शोथ है वो वेग धारण से कैसे कोरिलेट करता है। नेक्स्ट। नेक्स्ट रूप लक्षण अगर हम देखें तो महर्षि चरक ने ब्रॉडली डिस्क्राइब किया है, दैट इज सूनक स्पर्श अक्षम स अर्ति नीलपित्तम अश्रुक श्रवेत श्रोणी वंशण पृष्ठार्थी ज्वरार्ताया परिप्लुता। महर्षि सुश्रुत के में देखे तो उन्होंने सिर्फ एक ही सिम्टम बोला है, दैट इज ग्राम्य धर्मेण ऋजावृषम, जिसको हम डिस्पैरियूनिया बोलते हैं। एंड वाग्भट महर्षि का अगर सिम्टोमेटोलॉजी देखें तो उन्होंने चरक महर्षि ने जो बोला है उसके अलावा दो सिम्टम्स और बोले हैं, अरोचक एंड अतिसार। अगर ये सारे सिम्टम्स को हम डिस्क्राइब करें तो मेनली प्रत्यात्म लक्षण होते हैं सून स्पर्श क्षम योनि एंड ज्वर एंड डिस्पैरियूनिया। अगर स्राव रिलेटेड हम सिम्टम्स देखें तो जो डिस्चार्ज है नीलपित्त अशित अश्रुक स्रवित, जैसे कि प्रैक्टिस में लक्षण को देखें तो योनि में दाह या वेदना भी मिल सकता है, टेंडरनेस मिल सकती है। और अगर अन्य लक्षण को देखें तो कटिशूल है, उदरशूल है या अरोचक है, वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट। मैंने चेंज किया है, आई हैव चेंज्ड। ओके मैम, अगेन नेक्स्ट। अगर हम संप्राप्ति देखें तो मिथ्या आचार है, उसकी वजह से साइमल्टेनियसली वात पित्त प्रकोप होगा एंड इट विल लीड टू श्रोथ, सॉरी, it will create a shoth in yoni that will ultimately presented as a सून स्पर्श अक्षम योनि। साइमल्टेनियसली अगर हम भ्रूश मैथुन देखें तो एक्सेसिव कोइटस की वजह से जो पेनिस एंड विजाइना है उसमें फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से वहां पे उष्णता क्रिएट होगी, दैट विल लीड टू हाइपरेमिया एंड इसकी वजह से वहां पे लोकल कंजेशन हो सकता है। और ग्राम्य धर्म में जो ऋजावृषम बोला है डिस्पैरियोनिया, वो हमें भ्रूश मैथुन की वजह से मिल सकता है। अगर आगंतुक निदान देखें जैसे कि अपद्रव्य प्रयोग है, विषम प्रसूति है, विषम प्रसूति है, वेग विधारण है, उसकी वजह से वात प्रकोप होगा, शैथिल्यता आएगी योनि में एंड अल्टीमेटली शोथ क्रिएट होगा। सो दिस ऑल विल कंबाइनली क्रिएट परिप्लुता और हम जो रिजेंबल्स बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। नेक्स्ट। ट्रीटमेंट में देखें तो हम कोई भी डिजीज को अगर ले तो निदान परिवर्जन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रकृति स्थापना। तो निदान परिवर्जन में अगर हम देखें तो जैसे हमने आगे देखा कि मिथ्याचार से एंड एप्पल 40 ईटिंग हैबिट से जो हमारे आहार विधि विधान बताए हैं वो
अगर पेशेंट फॉलो नहीं कर पा रहा है कि उष्ण मसनियात जो स्निग्ध मसनियात बोला है, तो हमें वो उसको एडवाइस करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं तो उसको सब एक साथ समझाना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो उसकी हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलरली क्या निदान कंजर्व कर रहा है। जैसे कि कई बार ये होता है कि कोई खेतीबाड़ी में काम कर रही होती है, स्त्री आती है पीआईडी का प्रेजेंटेशन लेके, तो उसको क्या रहता है कि उसको भी वेग विधारण की कंटिन्यूअस हैबिट रहती है, वो आतप सेवन करती है, मतलब धूप में काम करती है, फिर जाके उसको पानी पीना रहता है या फिर खाना खाना रहता है, उसकी वजह से उसको ये सारे जो आतप सेवन बोला है वो डायरेक्टली रक्त दुष्टि एंड पित्त दुष्टि करता है, तो हमें उसको पर्टिकुलर निदान परिवर्जन बताना पड़ेगा। सेम एज ऑफ विहार है कि एक्सेसिव कोइटस है, एक्सेसिव एक्सरसाइज है, जो एबनॉर्मल पोस्चर्स है वाइल इंटरकोर्स एज वेल एज इन डेली रूटीन, जो ऑफिस में बैठते हैं या फिर कई बार सिटिंग पोस्चर्स भी सही नहीं रहता है, तो ये सब है वो वात को अल्टीमेटली प्रकोप करता है, क्योंकि वात के बिना कोई योनि व्यापक नहीं होता है। दैट्स वाई जो ये वात प्रकोपक विहार है एंड पित्त प्रकोपक विहार है, उसको हमें पेशेंट को अवॉइड करने के लिए एडवाइस करना चाहिए। नेक्स्ट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। महर्षि ने बोला है, महर्षि चरक ने डिस्क्राइब किया है कि मृदु वमनादि पंचकर्म करवाना चाहिए, कोई भी योनि व्यापक हो चाहे, और फॉलोड बाय जो स्थानिक चिकित्सा है, जैसे कि पीचू है, पूरण है, उत्तर बस्ती है, बस्ती है, अवगाह है, क्योंकि एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वात दोष ट्रीटमेंट करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आगे बोला कि वात के बिना कोई भी योनि व्यापक नहीं होता है, तो वात दोष को ऑलवेज हमें ध्यान में रखना चाहिए। महर्षि सुश्रुत ने सेम ही बोला है, स्नेहादि कर्म पहले करना चाहिए, उत्तर बस्ती करनी चाहिए, शुक्र आर्तो दोष ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, स्तन रोग की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्षीर का प्रयोग बोला है, लहसुन स्वरस का भी प्रयोग बोला है, बिकॉज लहसुन है वो परम वात शामक है। मेनली अगर उसको हम डिवाइड करें चिकित्सा को, तो आभ्यंतर एंड बाह्य। आभ्यंतर अगर हमें चिकित्सा है उसको चूज करना है, ऐसी मेडिसिन चूज करेंगे जो शोथनाशन हो, वातानुलोमन करती हो, पित्त शमन हो, और बाह्य है प्रक्षालन, पीचू, वर्ती एंड लेपन। तभी जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज बोली है वो पेशेंट प्रोफाइल पे डिपेंड्स करती है। जो आभ्यंतर मेडिसिन है उसमें हम डेली प्रैक्टिस में जो करते हैं यूज, वो है त्रिफला गुगलू, पुनर्नवादी गुगलू, पुष्यानुचूर्ण, त्रिफला क्वाथ, दारवादी कषायम, दशमूल क्वाथ, पुनर्नवाष्टक क्वाथ। ये सारी जो मेडिसिन है वो मेनली पित्त शमन एंड वातानुलोमन करती है। गुगलू है वो हमारी एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है। अदर देन ये जो अभ्यंतर मतलब शमन औषधि है, वो इसलिए भी जरूरी है कि शोधन करवाने के बाद हमें कंटिन्यूअस चेक रखना पड़ता है पैथोलॉजी पे, तो ये हमें मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट मैम, लोकल ट्रीटमेंट। पंचवल्कल क्वाथ से प्रक्षालन करवा सकते हैं जब वे एक्सेसिव डिस्चार्ज हो। गुरुची त्रिफला क्वाथ यूज कर सकते हैं, त्रिफला क्वाथ है, आरगवत पत्र क्वाथ है, शोधन कषाय है विद गोमूत्र। पीचू हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पीचू तभी यूज कर सकते हैं जब एक्यूट इन्फेक्शन ना हो या फिर एक्सेसिव डिस्चार्ज ना हो, क्योंकि अगर तेल मीडिया यूज कर रहे हैं तो अगर डिस्चार्ज होगा तो इट विल क्रिएट मोर इन्फेक्शन। तो पीचू है वो हम दशमूल तेल का यूज कर सकते हैं, धातक आदि तेल है व्हेन योनि कंडू होता है तब अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक्सेसिव डिस्चार्ज हो तो पेशेंट को कंडू की भी प्रॉब्लम हो सकती है। उदुबर आदि तेल है, पद्मक आदि तेल है, पंचवल्कल आदि तेल है। अवगा हम देखें तो पंचवल्कल क्वाथ और नींबू पत्र क्वाथ से हम अवगा करवा सकते हैं। अवगा है वो जो इन्फेक्शियस डिस्चार्ज है उसको कम करेगा और उसको पेन में भी रिलीफ होता है लोकल। स्थानिक ट्रीटमेंट को जो प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन है, क्योंकि वजाइना है वो उसकी म्यूकोजा है वो बहुत अच्छी एब्जॉर्बर है लिपोफिलिक ड्रग्स की, और ऑयल है वो बहुत ही अच्छा लिपिड मीडिया है, और वहां पे बहुत रीच ब्लड सप्लाई होता है, तो जो मेडिसिन है उसको परमिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो ये रूट है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको अवॉइड करता है, उसकी जो जीआई ट्रैक्ट की हमें जो साइड इफेक्ट्स देखने को मिलती है उसे भी अवॉइड करता है। और अनदर एडवांटेज ये है कि पेशेंट है वो उसको सेल्फ इंसर्ट कर सकता है। दूसरा, जैसे कि हम सोचे कि जो हार्मोनल स्टेरॉइड्स रहते हैं मॉडर्न वाले, वो वेजाइनल पेसेरी के फॉर्म में देते हैं ताकि वो हेपेटिक जो मेटाबॉलिज्म है उसको सरपास कर सके। तो जो ये बहुत ही एक अच्छा
वो है कि हम स्थानिक ट्रीटमेंट यूज करें। नाउ PID. So we all know that PID is ascending infection in which pathogenic microorganism ascend from the lower genital tract to upper genital tract. PID is not a singular disease entity but describes a spectrum of disease. जो इंटरनेशनल सोसाइटी है फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, वो अपर जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन वर्ड रिकमेंड करती है। और PID सर्विसाइटिस से स्टार्ट होके एंडोमेट्राइटिस पे प्रोग्रेस हो सकती है, and further involvement of fallopian tube as pyosalpinx and ultimately involve the ovary as a tubo-ovarian abscess. रिस्क फैक्टर अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है वो प्रायर इन्फेक्शन जो क्लाइमेडिया और गोनोरिया का हुआ है पेशेंट को, या फिर ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी एट यंगर एज, प्रायर हिस्ट्री हो जिसको PID की, कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव पेशेंट यही यूज कर रहा है, या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर जो IUD यूजर है, तो इसमें PID होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। वीक एविडेंस ये है कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सब्सटेंस एब्यूज, excessive vaginal douching, high frequency of coitus, cigarette smoking, and intercourse during menstruation. जो वजाइनल डूशिंग बोला है वीक एविडेंस में, वो वजाइनल डूशिंग है, वो वजाइनल फ्लोरा है उसको हिंडर करता है, और उसकी वजह से जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कम हो जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो असेंड करते हैं जीनेटल अपर जीनेटल ट्रैक्ट में। क्लिनिकल डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है PID का? मिनिमल, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो अदर देन हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन एंड PV एग्जामिनेशन। तो मिनिमल क्राइटेरिया है वो PV एग्जामिनेशन में सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस और एल्स यूटराइन टेंडरनेस और एल्स एडेक्सल टेंडरनेस मिलना। एडिशनल क्राइटेरिया है वो ओरल टेम्परेचर ग्रेटर देन होना 101 डिग्री फ़ारेनहीट के, एब्नॉर्मल सर्वाइकल म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज मिलना, सर्वाइकल फ्राइबिलिटी मिलना, जो नली पेरेस में फर्म सर्विक्स मिलती है या पेरेस में जो सॉफ्ट समवॉट सॉफ्ट सर्विक्स मिलती है उसकी जगह फ्राइबल सर्विक्स होती है, मतलब टच करने पे ही वो ऊज करने लगती है। तो ये भी एक साइन मिल सकता है हमें। एब्यूटेंट व्हाइट ब्लड सेल्स ऑन माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूशन ऑफ वजाइनल फ्लूइड, अगर ब्लड CBC में देखें तो ESR है वो रेज्ड मिल सकता है, CRP रेज्ड मिल सकता है। और स्पेसिफिक क्राइटेरिया है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड शोइंग थिकन्ड फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स विद और विदाउट फ्री पेल्विक फ्लूइड और ट्यूबो ओवेरियन कॉम्प्लेक्स। एंडोमेट्रियल बायोप्सी है with histopathologic evidence of endometritis and laparoscopic finding consistent with PID। ये सारे जो ये जो क्राइटेरिया है वो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी मिले, कोई एक दो मिल सकते हैं। And clinical features. Clinical features, pain is a main entity in a pelvic inflammatory disease that can be spontaneous pelvic pain, dull or acute in nature, continuous pain or bilateral side pain. पेन जो विसरल ऑर्गन है हमारे यूट्रस और ओवरी, विसरल पेन है वो रिफर्ड होता है। तो अगर अपर बॉडी ऑफ यूट्रस इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से हाइपोगैस्ट्रिक में पेन हो सकता है। अगर यहाँ अपर एंड मिडियल थाई पोर्शन में पेन हो सकता है। अगर ओवरी इन्वॉल्व है तो इंग्विनल रीजन में पेन हो सकता है। अगर सर्विकल इन्वॉल्वमेंट है तो सैक्रल पेन हो सकता है, बैक एक हो सकता है उसको। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन होगा पेशेंट को तभी जब लिवर इन्वॉल्वमेंट होगी या फिट्ज-कर्टी सिंड्रोम होगा। म्यूकोपिरुलेंट एंडोसर्वाइकल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हो सकती है। फीवर विद चिल्स और नोजिया एंड वॉमिटिंग मेनली एक्यूट इन्फेक्शन में देखने को मिलते हैं। डिस्पेरिनिया इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट फीचर्स। बर्निंग, मिक्चुरेशन एंड यूरिनरी सिम्टम्स है वो तब देखने को मिलेंगे मेनली जब गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एक्यूट PID. Involvement of fallopian tubes is almost bilateral. Pathological process is initiated primarily into endosalpinx and usually follows menses due to loss of genital defense. Gross destruction of epithelial cells, cilia and microvilli. Acute inflammatory reaction की वजह से all layers involved होंगे. Tubes become edematous and hyperemic. Exfoliated cells and exudate pour into lumen and agglutinate the mucosal folds. जो एब्डोमिनल ऑस्टियम होता है वो क्लोज हो जाता है एडिमा एंड इन्फ्लेमेशन की वजह से, और यूटेराइन एंड है वो कंजेशन की वजह से क्लोज हो जाता है। वो सारी जो पैथोफिजियोलॉजी होती है मेनली USG पे देखने को मिलती है। पेशेंट जब हमारे पास आता है तब उसके लेट सीक्वली लेके आता है, जैसे कि इनफर्टिलिटी, हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सकता है या एडिशंस हो सकते हैं। पायोसेल्पिंग्स लेके पेशेंट हो आ सकता है। जनरली एक्यूट अटैक लेके बहुत पेशेंट कम आते हैं हमारे पास, और अगर आते हैं तो हम
मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम रिफर करते हैं एक्यूट पीआईडी स्टेजिंग। US IDSOG USA recommends following stages. Stage 1, woman who fulfills the CDC clinical diagnostic criteria, major diagnostic criteria, and one or more of its minor criteria, but who do not have overt peritonitis and who have not had any prior documented STD in upper tract infections. Stage 2, so above criteria plus peritonitis. Stage 3, women with demonstrable tubo-ovarian complex or abscess evident on either physical or ultrasonographic examination. And stage 4, women with ruptured ovarian abscess. Next. Pathophysiology of chronic pelvic infection occurs due to the following acute pelvic infection or following low-grade infection या फिर tubercular infection. Pyogenic pathogenesis, both openings of tubes are blocked with damage to structures, and this can result in hydro or pyosalpines. Recurrent peritoneal surface infection can result in either flimsy or dense with surrounding adhesions with surrounding structures. Resulting fibrosis affects surrounding structures and may result in a frozen pelvis. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पीआईडी में मेनली सर्टल और माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है, पेशेंट को कभी एसिम्टोमेटिक रहता है, or delay in diagnosis and treatment probably contributes to inflammatory sequelae in the upper reproductive tract. जो subclinical and asymptomatic है वो 4% पेशेंट में देखने को मिलते हैं, 36% है माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, 60% ऑफ पेशेंट है वो सीवियर एंजाइटी शो करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है हमारा, उसको सपोर्ट करने के लिए मेनली हम सीबीसी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वजाइनल वेट स्मीयर या सर्वाइकल वेट स्मीयर, मेनली सीरोलॉजिकल टेस्ट टू एक्सक्लूड एसटीडीज, इमेजिंग एंड अगर इमेजिंग मतलब सोनोग्राफी है वो अनडिटरमाइंड है तब जाके हम एब्डोमिनल सीटी और एमआरआई प्रेफर करेंगे। एंडोमेट्रियल बायोप्सी इन केस ऑफ एंडोमेट्राइटिस और एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, and diagnostic laparoscopy is a gold standard for definitive diagnosis. Differential diagnosis: appendicitis, ectopic pregnancy, endometritis, ovarian cyst, cystitis and ovarian torsion. इसमें सबसे कॉमन है वो appendicitis and ectopic pregnancy के साथ कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। appendicitis में भी पेन रहता है, लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए जो appendicitis में पेन रहता है वो राइट इलियक फोसा में होता है, मेनली उसमें जीआई सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। एमेनोरिया वगैरह कॉमन एंटाइटी नहीं होता है, जबकि पीआईडी में पेन है वो ऑल अराउंड मतलब बायलेटरल हो सकता है, जीआई सिम्टम्स कम देखने को मिलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसमें भी वन साइड पेन देखने को मिलता है, और इसीलिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन में अगर देखें तो रिप्रोडक्टिव एज विमेन है तो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो एक्सक्लूड कर लेना चाहिए पहले ही। नेक्स्ट, प्रिवेंशन, primary prevention, that is sexual counseling, that is to practice safer sex, limit number of sexual partners, avoid contact with high risk partners, barrier method use करने के लिए हमें पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए, and oral contraceptives which reduce the risk of PID. Secondary prevention, screening for infections in high risk populations and rapid prognosis and effective treatment of STDs. Tertiary prevention है वो early intervention and complete treatment करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न में जो प्रिंसिपल्स है ऑफ थेरेपी दैट बेसिकली टू कंट्रोल द इन्फेक्शंस एनर्जेटिकली, टू प्रिवेंट द इनफर्टिलिटी एंड लेट सिक्विली एंड टू प्रिवेंट द री इन्फेक्शन। जो ओपीडी बेसिस पे अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक यूज रहता है, उसमें सेफ्ट्रायोक्सिन जो हम मोनोसेफ करके मेनली ब्रांड नेम पे यूज करते हैं, प्लस डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 14 days एंड अलोंग विद मेट्रोनिडाजोल। ये ओपीडी लेवल पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, और पेरेंटल ट्रीटमेंट है वो सेफोटेन इंजेक्शंस 2 ग्राम आईवी एवरी 12 hours अलोंग विद डॉक्सीसाइक्लिन। ये ओपीडी बेसिस पे होता है। पेशेंट को अगर आईपीडी बेसिस पे एडमिट कब करना पड़ता है, जब जो ये ओरल मेडिकेशंस है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, या पेशेंट प्रेग्नेंट है, पेशेंट एक्यूट इन्फेक्शन लेके आया है, सीवियर इन्फेक्शन लेके आया है, पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव हो, तो हमें उसको एडमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट,
ये परिप्लुता योनिव्यापद को हम पीआईडी से क्यों रिजेंबल्स करते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स सिम्टम्स। योनिशून है वो मेनली इन्फ्लामेशन इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे रिजेंबल्स करता है। स्पर्शक्षम दैट इज टेंडरनेस। सारथी नीलपित्तम अश्रुकस्रवेत वो ब्लूइश येलोइश मेंस्ट्रुअल ब्लड or vaginal discharge with pain. Basti and Kukshi Gurutvat, that is pain in pelvic, inguinal and back region. Atisar, that is diarrhea. So this was all about PID. Thank you. Nice presentation. Congratulations, Vaishali. It was really nice compilation and presented your, although it was very first webinar for you, but it was up to mark. Congratulations. Thank you, ma'am. Yeah. And sorry and pardon me because it was first and I was a little bit nervous, and PID is a very broad entity, so it was not possible to conclude everything in a 30 minutes. That's why Yes. Yeah, I can understand. I can understand that PIDs in introduction also I told that it is a very vast topic and it covers lot many organs. Pelvic inflammatory disease mean all the organs are involved, and it is not really possible to. But you have covered up all the aspects whatever were required and covered up in 30 minutes almost. Nice. Now, I would like to invite Dr. Rama Devi Ji, madam. She is very senior. Just now we have heard very new assistant professor, and now we are listening very senior professor and HOD, Dr. Rama Devi Ji, madam. Madam, welcome. And I think in your case also have to share screen. Wait. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. I will close first her screen. Okay, Then, ma'am. then I will share your PPT. Right? Okay, ma'am. Yeah. You start your topic. Wait, I have to stop her presentation first. Very good evening to everyone. Thank you, Kamini Dhiman madam and Agnihotri sir and Pavan sir and the team. And myself, Dr. Ramadevi, Professor and HOD from SDM College of Ayurveda, Udupi, Karnataka. Now I am giving few points related with the pelvic inflammatory disease. And here showing a picture, madam, third slide, picture, that is, it gives the upper genital tract and lower genital tract. Madam, third slide. Excuse me, ma'am. Okay. And upper genital tract and upper genital tract includes uterus, ovaries, fallopian tubes. PID usually will restrict that to PID to that only, but even it is upper genital tract infection, but lower genital tract also involved, that is vulva and the vagina. And PID is a disease of upper genital tract actually, but it is spectrum of infection and inflammation of the upper genital tract organs, typically involving the uterus, fallopian tubes, ovaries, pelvic peritoneum, and surrounding structures. It is attributed to the ascending spread of microorganisms from the cervicovaginal canal to the contiguous pelvic structures, causing endometritis, salpingitis, pelvic peritonitis, and tubo-ovarian abscess. Though it is given as upper genital tract also, lower genital tract also involves, because it goes from the lower genital tract to upper. I will show you that slides. And it is from the, madam, fifth slide, madam. Madam, fifth slide goes, yes, here, madam. And it starts from the vagina through the any infection or through the semen organism goes through the from the vagina to the cervix and then uterus, ovaries, and the fallopian tubes. If the outer end of the fallopian tube was blocked, it will be fallopian tube, it will be salpingitis only. When it is bursted, the pus goes to the peritoneum and parametrium and all, then it goes to peritoneum, it leads up to the peritonitis. That much complicated it was. And what is the, it is actually, the parasite is here it is bacterial infection, it is microbiology, is that is polymicrobial infection. So here actually, as what madam told, it is there are so many organisms
But anyhow, in this presentation, I restricted a few only, and it is commonly caused primarily by bacterial and sexually transmitted organisms like Neisseria, gonorrhea, and Chlamydia trachomatis. And here, these two organisms gives a lot of complications to the women. However, these microorganisms there are some microorganisms of the vaginal flora that also leads to PID. Those are Streptococcus, E. coli, and this gonorrhea vaginalis and Haemophilus influenza, etc. These are also associated with PID. And these, there is a percentage is given, that is Neisseria gonorrhea is only 30%, and Chlamydia trachomatis is also 30%. Mycoplasma, that is only 10%, whereas other organisms is to 30%. So, though it is given as Neisseria and Chlamydia also, that is 30% equally, but other organisms, others also there, that it gives almost 30%, leading to PID. Maybe other reasons like sexually so many partners, sexual partners, maybe like that is it. Coming to the incidence, and here it is, PID is commonly associated with sexually transmitted infections, and it leads to the reproductive tract infection and causing so many complications to the women. The incidence is rise due to rise in STDs and include a high number of sexual partners, one thing. And the incidence is increased day by day, and it is 2.2% per year it is increasing. Now the incidence is 4.4% in sexually active women. And 85% of the infections are spontaneous infections in sexually active women, and whereas the other 15% are due to the any procedures, iatrogenic, that is IUSH insertion, uterine curetage, endometrial biopsy, histosalpingography, vaginal douche. These all favors send the organism into the uterine cavity and causing complications, leading to PID and causing complications to the woman. And this is a schematic representation, that is from the STDs. Causing bacteria may enter the vagina and with the semen, and it reaches the cervix, and then through that it reaches cervix. Through that, the bacteria goes into from the cervix to the uterus, and then to the fallopian tubes, then the ovaries, and then from the ovaries, infection can leave fallopian tubes and spread to the other parts and leads to up to the peritonitis. Mode of transmission is ascending infection, gonococcal chlamydial infection by surface extension from lower genital tract through the cervical canal by way of endometrium and through the fallopian tubes. I'm not going to repeat this one, already I told. And through uterine lymphatic and blood vessels also across the parametrium, it leads up to that. Gynecological procedures favors and direct spread from contaminated structures in the abdominal cavity due to any procedures, that also leads to complications. And what is the pathology? Back to that, what happens? Involvement of fallopian tubes almost bilateral in most of the cases of the PID. And pathological process is initiated primarily in the endosalpinx. It usually follows menses due to loss of genital defense. And during menses, the cervical canal was kept open, and so that the defense the defense is less, and it is easy to the organism easy to spread. Actually, after the menstruation, and it cleanses the genitalia, they will is actually we are having traditionally that belief, but it is proved that during the menstruation there is a loss of genital defense and the tract was kept open, so the organism will go easily in. Because what happens, gross destruction of epithelial cells and cilia and microvilli, it destructs the microvilli also. So acute inflammatory reactions, all layers of the tube are involved. Tube becomes edematous and hyperemic and exfoliated cells, and these are all leads to the exudates pour into lumen and agglutinate the mucosal folds. And this leads to there is inflammation of the tubes, and the tubes are swollen, and the lumen of the tube is occluded with this pus formation or anything, and so that leads to the mucosal, that leads to some complications. There is a pain in the abdomen, etc. And PV will find out that fornices are tender with all those things. And abdominal ostium is closed by inflammatory adhesions, but uterine end is closed by congestion. The closure of both the ostia results in pent-up of the exudate inside the tube and swelling the tube. Depending upon virulence, watery or purulent exudate
And if it is water, that is hydrosalpines. If it is a purulent exudate, that become as biosalpines. And this afterwards, deeper penetration and more destruction. And possibilities are oophorytis, tubo-ovarian abscesses, peritonitis, and pelvic abscess. And what are the risk factors with all these things? The first point is that is sexual activity. Early coital, very young girl, if she participated in the sex, high frequency of sexual intercourse, that and frequent change of sexual partner all increase the risk. The possible reasons are high rate of infection in the partner pool, high incidence of cervical ectopy, and greater penetrability of cervical mucosa. These all leads to complication. And the previous history of acute PID, there is acute PID, there means though the treatment was given also, there may be recurrence and the patient may suffer from PID repeatedly. And IUCD users and increased risk of PID is limited to first 20 days after insertion, then it is increased. Area with high prevalence of sexually transmitted diseases. And coming to the menstruating women, the ciliary movement of the endometrial lining in the uterus and the cervical canal is directed downwards and discourages the upward spread of non-motile organisms to the cavity of the uterus. This natural protective mechanism is impaired during the menstruation because the cervical canal was kept open and become dilated, protecting epithelium of the endometrium is shed and raw surfaces present in the cavity of the uterus. Low socioeconomic status, that also leads to PID. Lack of barrier contraception, then smoking, bacterial vaginosis, and drug abuse are all implicated in increase of the incidence of the PID. What protective measures we can explain to the patient? First one is the contraceptive practice, barrier methods, especially condoms, diaphragms with spermicides, and oral contraceptive pills also. This again leads to there is the cervical mucus plug, it closes, and so that there will be the spermicidal agents it won't enter into the cervical canal, so that less chances are there in case of oral contraceptives. And pregnancy, due to increased vascularity and mucus cervical plug here, preventing upward transmission of the infection. Menopause, lack of menstruation decreases the risk of infection. So before I told you, menstruation is there means, and there the protective mechanism is impaired during the menstruation. When the menopausal woman is there means, both Neisseria and chlamydia attach preferentially to the columnar endocervical cells. With menopause, the endocervical canal is very smaller because the atrophy of the genitalia than the premenopausal women, decreasing the area of attachment of the chlamydia and the Neisseria. So the infection is reduced, decreasing the attachment. Decrease in the upward movement of these organisms. This changes likely lower the susceptibility of the postmenopausal women to infection. And monogamy, and they having a partner who had for the sex and who had vasectomy, and husband with azoospermia, that also leads to the PID is reduced in such cases. And what are the symptoms you will find out in these cases? Severe and lower abdominal pain. Sometimes it is dull, but afterwards in acute cases it is it comes under the acute abdomen only with abscess and all if it is ruptured. Bilateral lower abdominal pain and pelvic pain, which is dull in nature. The onset of pain is more rapid and acute in gonococcal than the chlamydial infections. And abnormal vaginal discharges becomes purulent or copious. So that is again one more important symptom we have to. In this case, the patient come to us with fever, lassitude, and headache, and with the lower abdominal pain. We thought that is some UTA, something else we will think, but we have to do the one pervaginal examination. If they after checking her temperature, then needs one investigation, immediate investigations. Then irregular and excessive vaginal bleeding is usually associated due to endometritis. Complications include endometritis, salpingitis, tubo-ovarian abscess, pelvic peritonitis, periappendicitis, and perihepatitis. And in this case, with all these things, again, the patient may complain dysuria, and the patient will complain dyspareunia. Because of this abdominal pain and vaginal discharges, he may complaining of
dyspareunia. And with that, inflammation of the liver capsule, which can accompany PID, may lead to right upper quadrant pain known as Fitch-Hugh-Curtis syndrome, occur in 5 to 10% of causes of acute salpingitis. And here there is violin string-like structures present from the abdominal wall to the liver capsule. So this may be perihepatic thread-like additions between the liver and the diaphragm. We'll find out that we came to know in the either abdominal USG, transabdominal USG, or in the MRI. And signs: rise of temperature beyond 101 degrees, and abdominal palpations reveal tenderness on both the quadrants of lower abdomen. The liver may be enlarged and tender. And vaginal examination reveals mucopurulent cervical discharge. Fecal examination shows congestion of the cervix and the purulent discharge. And bimanual examination reveals cervical motion tenderness, uterine tenderness, and adnexal tenderness, and palpable mass may be present of varying size. And these are the symptoms of a pelvic inflammatory disease. The key symptoms are abdominal pain and pain in the lower abdomen also, and then the patient complaining of vaginal discharges and bleeding during and after the sex, and this leads to there is a unprotected vaginal and cervical discharge will be there, and unprotected sex is there. In those cases it is more common, and the treatment is either antibiotics, otherwise surgery, and these all leads to complicating the woman with infertility, and the patient will come to us sometimes with the infertility and sometimes with the ectopic pregnancy, and the treatment is with according to the condition, either the antibiotics you can give one course, and surgery is the line of treatment if it goes up to that level. And coming to the diagnosis of a PID based on the history, most common symptoms are lower abdominal pain and vaginal discharges. In case of gonorrhea, it is a thick purulent discharge, whereas in chlamydia, it is a thin watery discharge. And abnormal uterine bleeding will be there on and off. Either during the menstruation, there may be heavy bleeding, otherwise intermenstrual bleeding also there, and which is very common after the coitus, post-coital bleeding. Urinary symptoms. Then the dysuria will be there, burning micturition will be there, and the secondary dysmenorrhea will be there due to congestion and all. Then examination findings. When you do the bimanual examination, as I told before, that there is uterine tenderness, adnexal tenderness, cervical motion tenderness, all are present, and this can be differentiated with ectopic pregnancy. And coming to the CDC criteria for the diagnosis of PID, and here it is the minimum criteria they set, and additional criteria and definitive criteria. Coming to the minimum criteria, they said that adnexal tenderness or mass, and if there is a mass in the adnexal, like pelvic abscess, and it gives severe pain, and patient won't allow us to do PV, and cervical motion tenderness and uterine tenderness is there. Then the additional criteria: oral temperature and abnormal cervical mucopurulent discharge or cervical friability is there. Presence of abundant number of WBCs and irregular vaginal bleeding, elevated ESR and CRP levels, and intracellular diplococci on gram strain from endocervix, that you will find out, and laboratory investigations. And more, if you take the swab from the ectocervix, there are more than 5 WBCs present on microscopic reading. Then what is the definitive criteria in this case? Endometrial biopsy or histopathological evidence of the endometriosis, that is important. And that this is not the first step you have to do. And first you have to take the swab, and you have to give some appropriate antibiotic. And if there is recurrence, if you have any doubt, then only you have to go for the endometrial biopsy. And transvaginal sonography or MRI techniques showing tubo-ovarian abscess, Doppler studies suggesting pelvic infections. Laparoscopic findings, this is a gold standard method, already Vaishali told that one. Findings consistent with PID. Coming to the investigations. First, a pregnancy tested to exclude the ectopic pregnancy. And then high vaginal swab in case of this high vaginal swab in case of trichomonas vaginalis, candida, and bacterial vaginosis, and
Endocervical swab you have to take in case of gonorrhea and chlamydia. That is important. Then the complete blood count is important. ESR, raised ESR and C-reactive protein, you will find out. That is, again, you have to check it. And serological test should be done for both the partners to exclude any STDs. And vaginal wet mount test, that is very much important. You take one drop of the vaginal secretions and put on the KOH, and then you have to. So that is suggests that is WBs are present, means that is it is PID. And imaging techniques, that is transvaginal ultrasonography is the imaging modality of the choice. And transabdominal ultrasonography for a differential diagnosis you have to take. And there can be tubo-ovarian abscess appears as complex cystic adnexal or cul-de-sac mass with thick irregular walls and septations. And this you will find out. There may be fluid in the pouch of Douglas. That also you will find out in sonologist will give us a pouch of Douglas, fluid in pouch of Douglas that suggests PID. Even though you send the case for dysmenorrhea or something else, or fibroid or any other complaints, you send the ESG to your patient. Pouch of Douglas fluid is there, that suggests the PID, and patient come to you with that complaint only, telling some, unknowingly she is telling some other complaints. And other specific signs of ESG is beads on string appearance, waist sign, cogwheel sign. And here it is given that waist sign in the tubes, and then cogwheel shaped structure, swollen walls, swollen mucosal fluid into the tubes, and then beads on string inside the tube, that is beads are present in the tube. So that leads to that the lumen of the tube is occluded, intratubal cyst fluid is present. So that is typical case of hydrosalpinx, you will find out. And coming to the CTR MRI, and CTR MRI, that is sensitivity is 95%, accuracy is 93% in for diagnosing the PID, abdominal CT or MRI. And other diagnostic procedures are culdocentesis, endometrial biopsy, and diagnostic laparoscopy. This is the gold standard method. And here, endometrial biopsy, histopathological evidence of endometritis for that one. And culdocentesis, if you are checking, means take the aspirate the peritoneal fluid, and it's with the white cell count is there, means 30,000 per ml, more than that is a significant of acute PID. And then diagnostic laparoscopy is, and here you find out the perihepatic thread-like violin string adhesions can be seen between the anterior surface of the liver and the diaphragm, that is Fitch-Hugh-Curtis syndrome. That you will find out when you are doing the laparoscopy. With that is laparoscopy, it is the gold standard method, but it is here it is when you are diagnosed when you want to diagnose the case through laparoscopy, then you have to go for it. And here it is for all the reproductive health issues. We are updated that we are doing the laparoscopy only, and even in case of pelvic and abdominal pains. And coming to the recent advances in the diagnosis of pelvic inflammatory, other than this, even laparoscopy is updated. We thought more than that, we got few more points. That is, this advances the diagnosis of pelvic inflammatory disease have improved accuracy and speed. Those are some key developments include enhanced imaging techniques. And here it is MRI only, advancing imaging, high resolution transvaginal ultrasound and magnetic resonance imaging offer more detailed visualization of the pelvic structures. And these techniques help identify complications like abscess and chronic damage. And molecular diagnostic test, that is NATS, that is nucleic acid amplification test. These have improved the detection of sexually transmitted infections that often cause PID. These tests are more and specific compared to traditional culture methods. And NASH test and a point of care test. This is again another, this is a development of rapid point of care diagnosis for STI, allows for, that is again the swab is taken accordingly. You are going if you have doubt about the infection. For quicker identification and treatment, reducing the risk of PID development. Biomarker discovery. This is ongoing research on biomarkers associated with the PID. And here it is elevated specific inflammatory markers and cytokines can assist in diagnosing PID and differentiating it from other conditions like
with similar symptoms. And what is the sequelae of the PID? What happens? The first one is infertility. And infertility overall means when the patient come to us with any complaint to gynecopedy, and if she is not complete family, it ends with that the patient comes to us with infertility only. And if there is any YGs or anything, that it goes at the main complaint is YGs are irregular, when something else is there, at last ends with infertility. Here also, secular PID, the first complication of PID is infertility. Overall infertility rate is 12 to 50% after PID, and it is increasing with each episode. In first episode, it is only 8%. And there is again recurrence of PID, the same patient, then 15%, and it is increased up to the 40%. What happens every time the tube is damaging, and then it leads to that tubal blockage, and she never conceives afterwards. And recurrent vaginal infections, dyspareunia. 70% of women comes to us with dyspareunia due to PID, and chronic pelvic pain and recurrent PID in 25%. Ectopic pregnancy, more chances are there if tube is damaged, means either otherwise the with this swelling and inflammation and all, the tube, the peristaltic movements of tube is reduced because additions and all. So the conception matter will be there itself. It ends with most of the times ends with ectopic pregnancy in the tubes itself. 6 times more than those with no PID. Risk increase with each episode. In chronic PID, intraluminal additions may form, leading to entrapment of a fertilized womb and ectopic pregnancy ensures. Tubo-ovarian abscess. 10% of the women will achieve a successful pregnancy, but most of the people comes with abnormal pregnancy. Intermenstrual bleeding will be there. And grading of the PID. And clinical criteria and laparoscopic. Clinical criteria uncomplicated, limited to only tubes and ovaries, with or without peritonitis. In such a case, tubes are hyperemic on laparoscopy and mobile with no purulent exudates. And if it is moderate PID, that symptoms are more complicated PID with inflammatory mass or abscess involving tubes and ovaries. And that in this case, tubes become edematous. Before it is hyperemic only, then it becomes edematous, shows gross purulent exudates from the fimbrial ends. Tubes not freely mobile. And then the next one is severe cases spread to structures beyond the pelvis, large and ruptured tubo-ovarian abscess. In such case, patient comes to the acute abdomen. In such case, when you do the laparoscopy, then you came to know that it is pyosalpinx and inflammatory tubo-ovarian abscess. Violin sting-like additions also you will find out in pelvis and around the liver. And this is the gold standard investigation laparoscopy. Tubes and adnexes, they can be visualized directly. Can obtain peritoneal fluid for testing, and scoping for conception can be done. And here Boyer-Messel score, and here it is whether the patient can conceive or not, extent of the additions, and then nature of additions, size of hydrosalpinx, microscopic condition of the hydrosalpinx, thickness of the tubular. With all those things, we can diagnose, we can score this one, and then we can tell that whether your patient will conceive or not. That is Boyer-Messel score for conception, whether patient will conceive or not. After the laparoscopy, we can score it, and then we can scoring of the tube, and we can tell. And coming to the next, that is Pitt-Hughes-Curtis syndrome. That is in laparoscopy only. And additions form that previously I told, that is overall incidence is 10% only. And this is seen both in PID due to chlamydia more than the gonorrhea. And staging of PID can be done on other method. Gaines-Willis staging. Gaines-Willis staging is if stage 1 no peritonitis, stage 2 peritonitis is present, stage 3 it is tubo-ovarian mass and abscess, stage 4 is ruptured tubo-ovarian mass. And long-term complications are infertility. Infertility, it is more common, and ectopic pregnancy, and then hydrosalpinx, chronic pelvic pain, recurrent PID. And these are all the complications, long-term complications. And what is the management after hearing all these things? This much signs and symptoms are there. There are so many investigations. The first point is according to National AIDS Control Organization, according to guidelines of that organization, syndromic management of PID is followed. The principle is least investigations followed by
initiation of treatment. The first one is management. Doxycycline, yellow kit it is, yellow kit, green kit, gray kit and all is given. Doxycycline 100 milligrams for BD for 14 days. Cefixime is given, metronidazole is given, and PID is sexually transmitted disease. So the male partner should also be treated with gray kit. The same treatment can be given. And here it is azithromycin and cefixime is given to him. And other indications of gray kit is the cervicitis, erythritis, and anorectal discharge, scrotal pain syndrome is there. In those cases also, you can give the azithromycin and the cefixime for the male partner. And if the infection is there, means according to that, CDC recommendation in non-pregnant women is trichomonas and bacterial vaginosis. In that, metronidazole can be given, and candida, fluconazole can be given. Alternatively, Ibraxa fungal tablets were given, and then chlamydia, that means there means doxycycline, azithromycin can be given. Gonorrhea, ceftriaxone and single dose can be given, followed by the cefixime for a single dose can be given. And then that is the CDC recommendation in non-pregnant women. Syndromic management of vaginal discharge is there, means in that case, green kit, fluconazole and all given. Partner need not be treated in this case. Important indications of diagnosed laparoscopy and chronic pelvic pain unresolved. And then here in this case, treatment failure in endometriosis and secondary dysmenorrhea or in case of chocolate cyst. So this treatment is not beneficial in those cases. PID is there, means you are diagnosed the PID, the symptoms, okay. And if it is endometriosis, there are some medications and all we are not correctly diagnosed, that diagnosed as a PID. In such cases, we will be failed. Treatment will be failed. And coming to the recent advances in the treatment of pelvic inflammatory disease, excuse me, enhanced antibiotic therapy. And here newer and more antibiotics and combination therapies are being used to better target the bacteria causing PID, particularly for resistant strains. And choice of antibiotics depends on specific pathogens identified and local resistance of the partners. Then the updated regimens typically include outpatient treatment and inpatient treatment. Outpatient treatment, intramuscular ceftriaxone 500 mg and doxycycline 100 mg orally twice daily for 14 days supposed to be given. Metronidazole twice daily for 14 days to cover the enteropic bacteria. Then the upgrade regimen typically include inpatient treatment, that is, in severe cases when oral therapy is not feasible, means cefoxime IV 2 grams IV every 6 hours or cefotaton 2 grams IV every 12 hours combined with doxycycline orally or IV every 12 hours is recommended. Alternatively, clindamycin and gentamicin IV daily can be used. Once daily can be used. And these regimens aim to cover a broad spectrum of pathogens, including Neisseria, gonorrhea, chlamydia, trichomatitis, and anaerobes. Treatment guidelines may vary by region and specific patient circumstances. So it's essential to follow local protocols and consider patient-specific factors. Early detection and diagnosis. Improved diagnostic tools, including rapid tests and advanced imaging techniques, help in earlier and more accurate detection of PID, which can lead to more effective treatment. Personalized medicine. Advances in genomics and molecular diagnostics are paving the way for personalized treatment plans based on the specific pathogens involved and the patient's individual response. And minimally invasive surgery. For cases that do not respond to antibiotics, laparoscopic surgery is increasingly used to remove infected tissue with less recovery time compared to traditional surgery. Vaccine research. Ongoing research into vaccines for sexually transmitted infections such as chlamydia and gonorrhea aims to reduce the incidence of PID by preventing infections that commonly lead to it.
These advancements contribute to more effective management of PID, amazing to reduce long-term complications and improve patient outcomes. Coming to the Ayurvedic part, inflammation or paka is the inherent karma of pitta. Hence, inflammatory pathology takes place with the involvement of the pitta. So, PID has been correlated to the pitta pradhana univapas. And here, pitta pradhana univapas, paitaki, paripluta has taken, and I included even slashmiki univapas because it is correlated with the vasinitis of variant etiology. So, I included that also because the PID is upper genital tract infections only, but it starts from the lower genital tract. So when it starts from that, there is vasinitis, there is vaginal congestion. So that leads to there is itching sensation. If left untreated, the organism might have entered into the cervix and leads to upper genital tract infections. That's why I included Slashmiki also. Coming to the Ayurvedic part of the Saman Hetu, and here Midyachara Tasana Pradhishtena Artha Benija. Jayante Bijadosh. Here it is Midyachara, Midyahara and Vihara. So that is Midya Vihara. Early coitus and multiple partners. So that is Midya Vihara. And then Bijadosha, genomes also. And then coming to the Sushrita Vipin, Pravardalingam Purushattam, so very young girl participated in the sex. That is young, early coitarchy. So these leads to PIDs. And coming to the Pittaleni Vapat, and with that Nidana, Vyapat Kotlam Lavanakshara, with that, Daha Paka Jaroshnartha, Nila Pita Siddhartha, Bursoshna Kunapasrava, Yonisat Pittadushta. And here he said that Daha Paka Jaroshna, Daha Paka. There is a congestion and there is suppuration. There is a pus formation is there with the congestion and all. And that is when we came to know when hydrosalpines are, we came to know when the patient landed at pyosalpines and all. And we will get the early stages. And there is, with the patient come to us with that, there is rise of temperature is there and the pain is there. And Pusoshna Konapasraha, that is because if there is a discharge that is having the excessive discharges and then hot intake, because that is, they said that shows the pitta predominance. Atyardam pittala, yonir daha paka jaranta given. Excessive pitta is there means that leads to burning sensation and suppuration explained by the Sushrita. And coming to this Lakshmiki Yoni Vyapa, he said that Taraka said, Kapha Bishan Yoni Duchetsriya, Kuryat Pichela Sritam Kandu Grasta Alpavedana. Kandu Grasta Alpavedana, Pandu Varna, Pandu Pichelatavahan. It is here said that purulent discharges we studied and Pandu Varna is there. Kandu Ta Alpavedanam. There is mild pain and excessive Kandu is there according to Charaka. Then Sushrita told that Kandu Yukta Sitalaha, very cold, touch very cold because that discharges that shows the kapha predominance only and excessive coldness he said. And all other Chakrapani told that which is due to with Sleshma Mashrukdara and Pitta Jashrukdara Lakshanas also present, they said. Then the Astanghrudi and Ashtang Sangra also given the almost the same explanation. Then coming to the management, when it is Kandu is there excessive, so they said that Rukshoshnam Kuryat Vichakshanaha. Charaka told, Charaka Vag, but everyone told. And they said that Rukshoshnam Oshadam Katupraya Samutra Vastayoitaha. Katupraya. That is Sleshmalayam Katu. Charaka at one place he said that Katu Dravya Vasti and Mugomutra Vasti. That is given. And all other acharyas told Rukshoshna Rukshoshna Oshadam. Ruksha and Vushna Oshadis are Vushna Viradravas are given. And again, Charaka told Shyamadinam Kapatura. That is Trivruta Kalka Dharana explained by the, because that gives relieves the kapha quickly. That is why it is explained by the Charaka. And again, Charaka told, all the acharyas told, Charaka specially explained about the Varti in the Kapha Yoni Vapat. And when there is a slimy discharge, is the itching sensation is there, we will give the Shodhana Varti, that gives very good result. Sleshma Pradhishtam Varti Samshodhani Hita, Varahe Bhosha Pitta, Varaha Pitta Varti also given. That is
Paisa, Arka Paisa, Evachurnam Saindava. This with this Arka the Varti is given, that also gives good result. That is given as Muhurdharyam Secha Shukamana. He given beautiful explanation because all are Tikshna Dravyas, Arka Kshira, Yavachurna, Saindava, Tikshna Dravyas, and that leads to if the Varti is prepared with that Tikshna Dravyas, and if touch that vitiated or congested area, that immediately relieves the that congestion and all, but it gives some secretions from that affected area. At the same time, if you keep the Varti inside the vagina more and more time, then that leads to burning sensation. That is why Muhurdharya given, where just touch and remove it. Secha Sukambuna. So that is followed by the cleaning the genitalia with lukewarm water. And again, Charaka told it one more Varti, that is Pipali, Maricha, Masha, Sataha, Kusha Saindave. What's the Vartir Tulya Pradeshinya? That is, Pradeshini size, Varti prepared, that should be kept inside the, that gives good. So these the drugs also all are Shodhana Dravyas and Ropana Dravyas. Then Vagbhat also given the almost the same explanation. And coming to the Patya, Charaka told specially for the Patya, for the Sashmik Yoni Vapat, Thailam Yavanam Sidum Patyarishta. So that gives Thaila Pana is given here, and Sidu and Yavana, that also gives good Abhayarishta. So these are all relieving the symptoms. All are Ushna Virya Dravyas, relieving the symptoms. Tikshna Dravyas, that is why that relieves the Abhishanti Guna of the Kapha, and so that's why it is explained. Coming to the modern part of the Slashmic Yoni, that is Trichomonas vaginitis, it is flagellated Trichomonas vaginalis is a flagellated protozoa. It gives foul smell for the discharge, and other symptoms are dyspareunia, dysuria, and then pruritus valvae. And the discharges are yellowish green, frothy, and foul smelling discharges. The vaginal pH is increased here. And if you do the perspective examination, you came to know that strawberry appearance of the vagina. And saline microscopy shows that motile flagellated. Then take one drop of the vaginal discharge, keep on the slide, and put one drop of the saline, and put under the microscope. You'll find out flagellated organisms. You'll find out under the microscope. Then pap smear and the culture, that is a gold standard investigation, that also you can do. And then that pap smear or culture gives, that is good idea about the antibiotics and all, culture and sensitive. Then pap smear gives if there is any other abnormalities or malignancy is there, that and all you came to know. Only it is inflammatory smear, well and good, that you will came to know. And then treatment for this is metronidazole can be given for 7 days, and it can be given even during the pregnancy also. Coming to the next Yoni Vapat, that is Upapluta. And here Charaka restricted this Yoni Vapat only with Garbhini, whereas Vagbhata given is even for all the women, any women suffering from the can suffer from the Upaplata Yoni Vapat. Both include that under Vata Sleshma Yoni Vapas. And here Charaka, that if they are withholding some Vegas like Chardin Swasa, then that leads to the Vayu is increased, because already there is Kapha predominance, is a Kapha Vikruti is there in the body. These two leads to reshaping the Yoni and causing the Svetasrava. Pandus Atoda Masravam, Svetasravati Vakafam. Svetasrava is white or watery discharge or white discharge, curdy like discharge, or milky discharge may present. Patient come to us with that only. Kapha Vatamyapta, Yoni Syat, Yoni Upapluta. So that is explained. Then here he said that Upapluta means it is overflowed like that. Overflowed and invaded. It is like that. That is overflow. That is excessive discharges. Excessive it is. That then is suggestive of monilial vulvovaginitis. And there is, in both the conditions, trichomonas and moniliasis, there is intense itching sensation is there. And whereas in moniliasis, there is more watery or milky discharge present. In both the conditions, there is excessive white discharge with pinkish and thick white vaginal discharge is present, itching the entire vaginal canal. And the treatment is for the Upapluta is Datakyaditaila Pichu. Datakyaditaila can be given for the Pichu, for the Abhyanga, and for the Vasti. And because it is with
Vata, Vikruti also there, Vasi also can be given. And after giving the Snehan and Svedana, give the Sneha Pichudarana and Vatahara Dravya, and they should contain the Sneha and Vatahara Dravyas, that is explained. Then the Sallaki, Jengini, Jambu, Davatwak, with that churna, prepare that either prepare the taila, otherwise kashaya, and that should be given to the women for the pitch. And then Panchavalkasya Pittarth, as it is. Panchavalkala can be given. Actually, it is Pitta, it's not Pitta, but the complaints that is the patient with inflammation is there. Panchavalkasya Pittarth given by the Charaka, but Panchavalkala can be used here also, though it is Kapha and Vata, but it is gives good result because of its Kashaya Rasa. And this can be correlated with the moniliasis, and the women, every woman, 70% of the women, at least one episode in their life, and it is widespread vulvovaginal infection caused by Candida albicans. And changes in the vaginal environment precipitate and induce the pathologic effects of the organism. The predisposing factors are when the patient was given broad spectrum antibiotics, that leads to, and late pregnancy, diabetes, thyroid, and OCP use. These are all leads to complications. And here it is, the clinical features are intense vulval pruritus, especially at night, and dysuria, dyspareunia, because they become congestion is there, so dyspareunia will be there, and curdy white discharge, that is the main symptom. Patient will come to us and tell with that symptom only patient will come to us, and itching sensation, and vulval erythema will be there because of the pruritus, and the severe vulvovaginitis. And how do you diagnose this one? Take 1 drop of the vaginal discharge and put on the slide, add 10% of KOH, potassium hydroxide, and then you'll shows the fungus and hyphae, although symptoms of vulvovaginal candidiasis such as pruritus and all. So that is that you will find out. And then most patients are diagnosed with microscopic examination of this one, and the vaginal pH is not altered here, whereas in trichomonas it is altered, increased more than that, and here it is vaginal pH is normal, and vaginal culture considered as recurrent symptomatic women with a negative microscope and normal pH. Then what is the treatment? And creams, clotrimazole creams intravaginally, and mechanizole vaginal suppository can be given, and fluconazole can be given, and maintenance of regimen fluconazole can be given for orally once weekly for 6 months, gives good result. Recurrence is there means that will be maintained with this. Then coming to the candidiasis, and here it is infection of skin, mucosa, and various internal organs caused by yeast-like fungus, Candida albicans, and occasionally by other Candida species. And here, Candidal vulvovaginitis is characterized by pruritus, pain, and acidic vaginal discharge that is usually thin but may become whitish curd-like like in severe cases, frequently found in pregnancy. And here in our area, we will get a good number of patients of candidiasis during the pregnancy. And what are the symptoms? And here itching is there, usually found in areas such as groin and folds of the buttocks, and between the breast, toes, fingers, and in the navel, there is itching sensation is there. And vaginal yeast-like infection, slow leakage of thick white cheese-like substances, the vagina may itch or burn. And during, especially during urination or during sex, pain and discomfort during the intercourse, patient complains. And this is the vaginal thrush. So vagina fully with curdy discharge, we will find out in the vagina. And if you do the, if you put the speculum, so that gives the white discharge, curdy white discharge, we will find out, we will be diagnosing. And coming to the diagnosis of yeast infection is done either via microscopic examination or culture. For identification by light microscopy, scraping up or swab of the affected area is placed on a microscope slide. A single drop of potassium hydroxide solution, so that is given. It gives the budding yeast cells, typically of many Candida species, that you will find out. This is the test explained, and that thread-like in the left side it is given, that is a positive, and whereas the other one is a negative.
And coming to the treatment of candidiasis, treatment is treatment options for systemic candidiasis are amphotericin, all fungal antifungal invasive, echinocandins are azoles. These are all fungal infections. It is explained. Treatment based on identifying specific candida species also, without identifying systemic candidiasis and specific is Candida albicans, fluconazole, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, and dose-dependent fluxus, Candida glabrata, and these are all given azole resistance is can be these are all often azole resistant. So amphotericin B and echinocandins can be given here. And coming to the next, this is explained in the classics related with PID is Parifluthayani Vapat. And here, Pittalayam was a Shavadudgara Dharana. Here, Shavada Udgara Dharana, like and here it is. When the woman during the intercourse with all these Vekas, Pitta Samujvayu done here with that Sunas Parsakshama, Sati Nila Basru. We want this point. Sunas Parsakshama. That is, it is edematous, and then you won't allow us to touch. That is, there may be tenderness, may be there. Shroni Vankshana Prushtati Jvararthaya Paripluta. There is a pain at the Shroni and the Vankshana Pradesha and the Prushtati. Okay. Then it's not exactly lower abdominal pain. It is Shroni pain means maybe lower abdomen or in the pelvic area pain is there. And Vankshana, low backache, Prishtabhaga. So that is present in the patient. And here, according to Susutha also given, he didn't mention all those things. General symptoms, Charaka included, whereas Susutha restricted that to Gramya Dharma Rujabrisham, pain during the intercourse, initiated by the Vayu. And all the followers, Susutha followers also given the same explanation. And Paripluta is, that is, Pariplutayam Parisarvato Vata Vikarena. So Vata Vikara is there, and that is why, as Madhuko Shatika explained that one, it is the entire genital tract or nearer to the genital tract. There is a pain. There is this inflammation is there. That is why there is a pain explained by the Madhuko Shatika. That is why, because the complete genital tract is involved, there is a dyspareunia explained by the Acharyas. And coming to the treatment, they said that Svedana and then Tarpana, Sneha Pichu, Vatahara Ahara is explained. And Sneha Pichu medicated with the Kwada of the Salaki Jangini Jambu Davatak, with that prepare the Thaila, and that should be used for the Sneha Pichu. And this is the diagrammatic representation of Pitta Vikruti 3 with all these symptoms. Pittala Yoni Vapat and Paripluta Yoni Vapat explained. And coming to the conclusion, that is, PID is a collection of inflammatory signs and symptoms of polymicrobial origin. Multiple sex partners, younger age than 25 years, and current or prior infection with gonorrhea and chlamydia have consistently been demonstrated to be significant factors associated with enhanced risk of developing PID. And it leads to tissue destruction, which favors the formation of the tubo-ovarian abscess, leading to infertility. In Ayurveda, it has been understood as Pittaja Vikaras, Slashmiki Yoni Vapat, and then the vitiation of the Vata. Sthana Shamshari of the vitiated doshas to the Yoni will lead to development of all the Yoni Rogas. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Very nice presentation, madam. It was excellent, up to mark. Okay, ma'am. Thank you. No words to say. That nothing was left by you. Everything no, madam, was you have covered. to give some suggestions. Everything was covered by you. No, madam, I need so many suggestions for this. From my side? Your side only. First your side, and then let other people also give suggestion. I have no objection taking suggestion. Sure. I would like to invite anyone if want to say something, like Rami sir, Anjana madam. Lot many people are there now available on the board.
सो रामी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जी मैम, जी। बहुत अच्छा सेशन रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रमा मैम ने ऐसा कोई चीज नहीं है जिस छोड़ी जिसके ऊपर बात की जाए। हाँ, मैंने भी यही कहा कि सब हाँ, कुछ आपने कवर किया है। काफी डिटेल में कर थैंक यू दिया सर, थैंक यू सर। और टाइम भी अच्छा रहा कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। एक चीज मैं यहाँ पर कहूँगा, यस। पीआईडी जो दो तरह की है बताई गई है, एक तो होती है एक्यूट और एक होती है क्रोनिक। तो क्रोनिक पीआईडी के कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं और एक्यूट के कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं। सिम्टम्स में भी ज्यादा थोड़ा सा अंतर है। और सर। जो अपने मैम ने जो अपने कंपैरिजन किया, जैसे ट्राइकोमोनियासिस बेजानिस अथवा फंगल इन्फेक्शन और कफा, तो उसको अपने जो कफाजियोनी है, ट्राइकोमोनियासिस है, अथवा तो जो मंद जिनके अंदर लक्षण मिल रहे हैं उनको अपने क्रोनिक पीआईडी के लक्षण है। त्रयावर्ता योनि है तो त्रयावर्ता योनि में अपर पार्ट में जो इन्फेक्शन हैं उसको अपन त्रयावर्ता योनि के अंदर रख सकते हैं। और क्रोनिक जो है उनको अलग क्लासिफाइड किया जाए और एक्यूट को अलग क्लासिफाइड किया जा सकता है। इसी तरह से नील पीत सितार्तवात, तो वहां आर्तव की जगह में मेरे ख्याल से डिस्चार्ज को लेना चाहिए। आर्तव में ज्यादा कोई अंतर नहीं पड़ता है। डिस्चार्ज जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, अलग अलग बैक्टीरिया के अनुसार अलग अलग तरह का डिस्चार्ज होता है। ट्राइकोमोनियासिस में डिस्चार्ज अलग होगा, मोनिलर इन्फेक्शन में अलग होगा, क्लाइमिडिया में अलग होगा, गोनोरिया में अलग होगा। कलर्ड उसके करेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज के आधार पर उसको अपने दोषों के अनुसार बताया जा सकता है। जहां तक परिपीड़िता योनि की है, तो परिपीड़िता योनि निश्चित ही एक्यूट के अंदर आती है। तो परिपीड़िता का मतलब ही होता परिमाने परितः सर्वतः, सर्वतः चारों ओर। और प्लोथ का आचार्यों ने अलग अलग वर्णन किया है। प्लोथ का मतलब होता है पिचू, जिसको कहते हैं। प्लोथ का मतलब गीला, चारों तरफ गीली रहती है, एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है, इसलिए इसको परिपीड़िता कहते हैं। एक्सेसिव डिस्चार्ज की वजह से परिपीड़िता। इसके अंदर एक पिकुलियर सिम्टम और मिलता है। जैसे जैसे सर्विसाइटिस में सिम्टम अलग मिलेंगे, एंडोमेटाइटिस में अलग मिलेंगे, मेटाइटिस में अलग मिलेंगे, साल्फिंजाइटिस में अलग मिलेंगे और पेल्विक एब्सिस के अंदर मिलेंगे। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता जाएगा वैसे वैसे इसके अपने सिम्टम्स के अंदर परिवर्तन आता जाएगा। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की है आचार्य ने, त्रोनिवक्षण सूलाग्ति। तो उन्होंने पर्टिकुलर जगह बता दी है कि किस जगह पे दर्द। देखिए, अपने जानते हैं इनर्वेशन कहाँ से होता है। सेक्युलर, अगर सर्विक्स के अंदर सर्विसाइटिस है तो सेक्युलर इनर्वेशन सेक्रम से है, तो सेक्रम के अंदर लोअर बैक रहेगा। अगर मेटाइटिस की तरफ जाता है तो वो जाके लंबर वर्टिब्रा के अंदर जाएगा। और इसी तरह से लंबर वर्टिब्रा में जो अपने साल्फिंजाइटिस है, ओफ्राइटिस है, वो भी वहां जाएगा। और अगर मैडम ने बताया जो इन्फेक्शन और स्प्रेड करता है, पेरिटोनाइटिस होता है, पेरिटोनाइटिस के बाद में अपने लीवर में पहुंचता है, तो उसका जो पेन है वो रिफर्ड हो जाएगा, सोल्जर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से क्लिनिकली भी इसको डायग्नोसिस किया जा सकता है। दूसरे उन्होंने बताया क्रोनिक के अंदर बहुत अच्छी बात की है। क्रोनिक का एक सिम्टम उन्होंने बताया है, वक्ति कुक्ति गुरुत्व अति सरारुचिक कारणी। इसमें गुरुत्व मालूम पड़ेगा। वस्ती और तटी और कुक्षी के अंदर गुरुत्व मिलेगा, उसमें ज्यादा पेन नहीं मिलेगा। इतना क्लासिफाइड आचार्यों ने किया है, तो उसको अपने इस तरह से क्लासिफाइड करके किया सकता है। ट्रीटमेंट भी निश्चित ही। पित्तजा योनि है, उसके अंदर देखिए पित्त में थोड़ा तीव्रता होती है, और जब आग के साथ में पानी वायु मिल जाती है तो और तीव्र हो जाता है। तो पित्तला योनि की अपेक्षा परिपीड़िता योनि में वायु और मिल गई तो ज्यादा तीव्र है, इसलिए पित्तला योनि के अंदर भी है। इसी तरह से सिम्टम्स और जबरदस्त बताए हैं। आम पक्वैषणी अध्याय अपने सुश्रुत कहता है, वहां पे जो सिम्टम्स मिले हुए हैं वो सारे सिम्टम्स यहाँ पे मैम मिलेंगे। यहाँ पे सारे के सारे सिम्टम्स उन्होंने बताए हैं। छिद्यति सत्राणी शस्त्राणी विद्यति शक्ति पीड़ित पाणी नाम वृश्चिक दंश विद्यते। तो ये पेन्स भी जो होते हैं वो बैक्टीरिया के आधार पर होते हैं, और सुपुरेशन किस तरह से कौन सी बैक्टीरिया का सुपुरेशन हो उसको आधार पर होता है। और ट्रीटमेंट भी इसी तरह आधार पे है। हमारे यहाँ वायु का ट्रीटमेंट करना है तो एक चीज, पित्तला योनि अगर चिकित्सा करनी है जहाँ पे पित्तला योनि की, तो वहां पे उन्होंने कहा है पंचवल्कल का प्रयोग कीजिए। मतलब शीत ही, तो उसको पंचवल्कल को शीत करने के बाद में उत्तरवस्ती देनी है, योनि प्रक्षालन करना है। अगर उपप्लुता में परिपीड़िता में करना है तो वहां उष्ण का देना है, क्योंकि बात भी है साथ में। दवा एक ही है, पंचवल्कल ही है, मगर उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, वहां शीत करके देना, वहां उसका करना।
घृत का प्रयोग करना नहीं है, यहाँ पर घृत का प्रयोग करना, वहाँ घृत का प्रयोग करना, वहाँ तेल का साथ में प्रयोग करना है। इतनी जबरदस्त साइंटिफिक बात की है। इसको बात जब अपने कंपेयर करते हैं अपने शास्त्रों से तो बड़ा, और कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आर्त बहे दुए, आर्त बहे दुए, तो आर्त बहे दुए में जहाँ भेद की चिकित्सा बताई वहां पे बताया है अपने बंधुत्वम और मैथुना सहिष्णुता। तो कॉम्प्लिकेशन जितने भी हैं, तो कॉम्प्लिकेशन मैडम ने बताया, पर डिस्परयूनिया होता है, स्टेरिलिटी होती है, दुनिया भर की चीजें बताई, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे भी हैं। इनको इतनी अच्छी तरह से क्लासिफाइड करके हम मॉडर्न के अनुसार अपने उसको देखते हैं तो हमारे आचार्यों ने बहुत कुछ कहा गया है। मुझे लगता है मैम ने बहुत सारा किया, और जो बच्ची प्रथम बार जो अपने प्रेजेंटेशन कर रही थी, मैं उसको बहुत बधाई दूंगा, उसने बहुत अच्छा किया। हम लोग तो टीचर हैं, तो टीचर लोग तो हम तो करते ही रहते हैं, बच्चे बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो Thank मैम you, बहुत sir. अच्छा, Thank you, sir. जी बहुत अच्छा Sir, रहा, that थैंक only यू। we need, sir. That only we need, sir. यस यस Suggestions, that only we need, sir. जी मैम। और इसमें भी दो तरह से, दोनों का ही अलग अलग वो है, असेंडिंग इन्फेक्शन और डिसेंडिंग इन्फेक्शन। Okay. डिसेंडिंग इन्फेक्शन के सिम्टम्स पहले, जनरल सिम्टम्स पहले आएंगे, और असेंडिंग के लोकल सिम्टम्स पहले आएंगे, फिर जनरल में परिवर्तित। Yes, yes, sir. तो इस तरह से अपने आचार्यों ने जो बताया उसके अनुसार भी हम लोग इसको क्लासिफाइड करके बहुत अच्छी तरह से संप्राप्ति जो बनाई गई है, संप्राप्ति बनाए मॉडर्न का, जैसे अपने टाइकोमोनियासिस है उसकी संप्राप्ति बनाए, मोनिलिसिस की जैसे संप्राप्ति बनाए, बैक्टीरियल की संप्राप्ति बनाए, उसके आधार पर हम अगर चिकित्सा करते हैं तो निश्चित ही बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को कंप्लेंट क्या लेके आया, डिसयूरिया और डिस्चेजिया की। मैंने ट्रीटमेंट किया, उसको कैथेटराइजेशन कर दिया, दूसरे दिन उसको यूरिन पास हो गया, यूरिन पास होने के बाद उसको रिलीफ मिल गया, दूसरे दिन फिर से उसको बाद टेंशन ऑफ यूरिन हो गया और फीवर आना शुरू हो गया। पता चला कि उसको एक क्लास अपने हॉस्पिटल के अंदर उत्तरवस्थी दी जा रही थी, उसको इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन होने के बाद मैम यहाँ तक पहुंच गया, उसको पेल्विक एब्सिस हो गया। और जब मैंने पीवी किया, पीवी करने के बाद में पोस्टुलेशन जो है पोस्टीरियर फॉर्निक्स में, कोच ऑफ डगलस में क्लियर कट मिल रहा था। फिर उसको ड्रेन किया, ड्रेन करने के बाद में उसको 10-5 दिन का एंटीबायोटिक पे रखने के बाद उसको ठीक किया। तो कई बार ऐसा भी होता है, इन्फेक्शन जो है ना हम लोग जो देते हैं, उत्तरवस्थी देते हैं, उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कौन सी जगह देना है उसका ध्यान रखना है, उसका भी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मेरे पास इस तरह का केस आया, इसमें सिम्टम लेके पेशेंट आता है डिस्यूरिया के, सिम्टम लेके आता है डिस्यूरिया के, और कंप्लेंट मिलती है PID। थैंक यू मैम। Thank you, sir. Anybody else wanted to add anything or ask something? Can ask. Madam, I would like to ask the Yeah, Ayurvedic Samprapti of जी, जी, hydrosalpinx and जी, endometriosis जी from मैडम। Ramveer sir or madam. Thank you. जी मैडम, रमादेवी मैडम। Yes, sir. Madam. Madam asked endometriosis and hydrosalpinx. That too, she asked about the. She asked about the samprapti of the endometriosis and hydrosalpinx. Okay. So that is no, that I told that it is given in the last but one slide. It is there is visheshan of the vata. If I'm talking about the hydrosalpinx and the visheshan of the vata, and then with kapha and pitta, mainly vata, and the infection spreads from the what I told before. No, madam, it spreads from the lower genital tract to upper genital tract. So that only leads that we can make it as a samprapti, like there is a vikruti of the dosha, and from that it ascending infection means no, it might have states like what samprapti purva rupa sana samshraya, and it goes to another place and it might have settled there, but it is not like other diseases. It is ascending infection as from the vagina to cervix, uterine cavity, and then to fallopian tubes. It goes like that. That only that ascending infection, that tract itself, how it is goes as only comes as the samprapti, and that nidan and all, that is what I told you, because of the different partners and any spermicidal agents used. So that and all leads to complications. Otherwise, that only can be taken as a samprapti for the hydrosalpinx. I understood. I'm not very sure about my answer, madam. Kamini madam, please clarify my doubt also. What, madam? What? This I feel the samprapti, hydrosalpinx.
Madam Yeah. asked hydrosalpinx. Yeah. Endometriosis is actually not our topic, Yeah. but hydrosalpinx is ours. I thought it is the ascending infection is there, no? So that itself it starts from the vagina and landing up into tubes. So the vitiated doshas goes there and settled there, and it is not actually like other diseases. It is starts from the down and ending the same route. I think that is Samprapti. I don't know. You clarify it. Yeah, madam, hydrosalpinx is a finding, or we can say the result of any chronic infection or disease, right? When we are doing a scan, USG scan, sometimes it is visible, or sometimes in HSG it is visible. Clinically, we cannot diagnose hydrosalpinx, right? First thing. And second thing, when there is fluid, there must be exudation. Exudation always come from inflammation. Inflammation is a result of any type of infection. We can say that whatever you have explained, all the infections, ascending infections also can be there, or sometimes patient may have some chronic tubercular infection. That can be also some, I have seen in some of my patients that that is also the causative factor in those patients, but exudation is there. So if we see through our Ayurvedic pathology, always, although you have explained very nicely that there is Vimarga Gaman of those and Sthan Sanshray of those, but there is always Sang also, right? And we can say that all the four types of Samprapti is there. There is Vimargaman, there is Sthan Sanshray, there is Siragranthi also. Asanga is also there. All the types of Samprapti is there in hydrosalpinx. And when we are treating hydrosalpinx, we have to break all these types of samprapti. Then only we will get result. It is not very easy to treat, but we get result in the cases of hydrosalpinx. If we go according to patient, after finding the causative dosh, which dosh is their sthan sanshray and which is avrit dosh. After that only we can treat that patient. Yeah. मैं थोड़ा सा ऐड कर Each and every case cannot be similar, although the finding is similar. Yeah. थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, मैम ने जो बताया। हाइड्रोसाल्फिंग्स, पहले हम अपने हाइड्रोसाल्फिंग्स को समझेंगे। हाइड्रोसाल्फिंग्स कोई डिजीज नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन है। Yeah, वही मैं बोल रही हूँ कि it is a result of some infections. कॉम्प्लिकेशन साल्फिंजाइटिस। अब इसको पाक से अंदर लेंगे तो रुक उपशमनः, वेदनोपशांति, ये क्रोनिक के अंदर चला जाता है। जो अपने एक्यूट साल्फिंजाइटिस की अपेक्षा जब उसका अपने मेडिसिन देते या मेडिसिन नहीं देते, जब रिकवरी हो जाती है तो दोनों ऑस्टिया, एब्डोमिनल और अपने यूट्राइन ऑस्टिया बंद हो जाते हैं, तो उसका जो डिस्चार्ज है, एक्सुडेशन है, वो इकट्ठा हो जाता है। तो जब एक्सुडेशन हो रहा है तो निश्चित ही वो श्लेष्मा है, क्योंकि वो स्टेलाइज्ड पस भी हो सकती है, स्टेलाइज्ड पस के रूप में इकट्ठा होता है, इसलिए उसको अपने हाइड्रोसाल्फिंग्स कहते हैं। तो रुकुपशमन कोई पाक होता है, शुरुआत में पहले बात थी, बात के साथ में पित्त था। यहाँ पर अपने चिकित्सा अगर करनी है तो मैम ने जैसा बताया कि यहाँ पे स्रोतोशोधन की चिकित्सा करनी पड़ेगी, कफ शामक चिकित्सा करनी पड़ेगी। वात कफ की चिकित्सा करेंगे वो तो ठीक है, क्योंकि बात के बिना बीमार गमन नहीं होता। बात कफ की चिकित्सा करेंगे, पित्त की यहाँ पर इतनी ज्यादा चिकित्सा नहीं करनी है। एक्यूट अपने साल्फिंजाइटिस है, साल्फिंजाइटिस है, वहां पे पित्त प्रधान चिकित्सा की जाएगी। यहाँ पर अब दोष की बात करें तो यहाँ पे अपने जो एंडोथीलियल लेयर है वो रक्त की है, एंडोथीलियल लेयर के साथ में रक्त भी है। उसके बाद में मांस स्रोतस है, जो अपने मस्कुलर लेयर है, तो उसको भी जो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, तो मांस भी वहां पे है। तो रस दोष, रस दुष्टि, रक्त दुष्टि, मांस दुष्टि, तीन दोष में धातु दोष हो रहे हैं। और दो दोष प्रधान है, श्लेष्मा और कफ और बात। पित्त भी है, उसके पित्त पहले था मगर वो सबसाइड हो गया। ये रुक उपशमन है, जो पाक के बाद की चिकित्सा सबसाइड की बात है, चिकित्सा है। तीसरी श्रोतोशोधन, तो आर्तव्य स्रोतस है, तो श्रोतोशोधन चिकित्सा यहाँ पे श्रोतोशोधन दी जाएगी। और कफ और बात का शमन करना होगा, क्योंकि क्रोनिक इन्फेक्शन है, क्रोनिक के बाद में आया है, इसकी चिकित्सा इस तरह से अपने श्लेष्मा और बात की चिकित्सा करेंगे। एक चीज और, जहां एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं वहां पर लोकल ट्रीटमेंट को कोशिश करनी चाहिए। एक्यूट कंडीशन में पीआईडी है तो लोकल अपने ट्रीटमेंट कम से कम दें, क्योंकि उसके असेंडिंग में जो इन्फेक्शन है और ज्यादा होने की संभावना रहेगी। और ओरल ट्रीटमेंट ज्यादा काम करें। क्रोनिक जहां पर है, क्रोनिक के अंदर अपने लोकल ट्रीटमेंट दें,
ओरल ज्यादा काम नहीं करेगा। वात के शमन के लिए यहाँ पर ये बात नहीं आ पाई, हमारे आचार्य ने नहीं लिखा है, मगर जहाँ पे बात अधिक मात्रा में है तो बात को जैसे बात विध्वंसक चूर्ण है, एकांग वीर रस है, जिसके अंदर रसमाणिक और पारदाता जो लायक एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, गंधक के प्रयोग उनका भी प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे प्रदांतक रो और प्रदांतक रस दोनों में अंतर है, तो यहाँ पर प्रदांतक रस का प्रयोग किया जाए तो इसमें अपने सल्फर के योग आते हैं। तो सल्फोनामाइड जो है आज भी कारगर है, पहले भी। तो एक्यूट में क्रोनिक में सल्फर के योग दिए जा सकते हैं, बात शामक योग दिए जा सकते हैं, गुगलू के योग दिए जा सकते हैं, और यहाँ पर अपने स्रोतो शोधन की ही चिकित्सा करनी पड़ेगी, ये संप्राप्ति इसकी बनेगी। थैंक यू रामवीर सर। इसके अंदर वायु का अनुलोमन और कफ की चिकित्सा स्रोतोरोध को दूर करके हम इसकी चिकित्सा करें, ऐसा आपने हमें बताया। थैंक यू, बहुत ही क्लैरिफाई कर दिया था। और एंडोमेट्रियोसिस की और बताया। एंडोमेट्रियोसिस जो है इसमें भी दोनों तरह की, सॉरी, एंडोमेट्रियोसिस में भी दोनों ही है, एक्यूट एंडोमेटाइटिस और क्रोनिक एंडोमेटाइटिस। अब एंडोमेटाइटिस अगर मैडम ने जैसे बताया ना, अपर पार्ट से आ रहा है, पर डिसेंडिंग अगर इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे एसटीडी वगैरह से आता है, तो एसटीडी के साथ में अपने ब्लड्स के यहाँ पर अपने जो जीआईटी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उसके अंदर एक विशेषता है, अपने आर्टेरियल वेनोसस, आर्टरी और वेन्स के अंदर एनास्टोमोसिस बहुत फ्रीली है, और इसके साथ साथ में ब्लड और अपने लिम्फ दोनों का एनास्टोमोसिस साथ साथ में, इसलिए इन्फेक्शन एक दूसरे से बहुत जल्दी होते हैं। तो एंडोमेटाइटिस अगर क्रोनिक है तो उसके अंदर भी, क्रोनिक के अंदर बात तो है ही है क्योंकि अपान वायु की दृष्टि है, बात के साथ में यहाँ पे श्लेष्मा को लेके और पित्त का चिकित्सा की जाएगी, और एक्यूट है वहां पर पित्त की चिकित्सा पहले करेंगे, बात को कम करेंगे, और श्लेष्मा की वहां इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ट्रीटमेंट अपने उन्हीं औषधियों से दिया जाएगा। कौन सी औषधि बात को शमन करती है, पहले कौन तरतम्य भाव से दोषों को देखते हुए, तरतम्य भाव से दोषों को देखते हुए, मैंने अभी जैसे बात की, अगर एक्यूट मेटाइटिस है तो उसमें लोकल मेडिसिन नहीं देनी है, लोकल मेडिसिन देंगे तो एक्यूट मेटाइटिस सर एंडोमेट्राइटिस नहीं, एंडोमेट्रियोसिस। Endometriosis is not a pelvic disease. That is the growth of the endometrium out of the uterus. वही रमादेवी मैडम, that मैडम is ने not भी, our topic. रमादेवी मैडम भी यही बोल रहे थे कि इसको पीआईडी में नहीं आता एंडोमेट्रियोसिस, इसलिए उन्होंने नहीं डिस्कस किया। मैंने सोचा एंडोमेट्रियोसिस पे भी बात पीआईडी नहीं है। Endometriosis she asked, but that is not our topic. Yes. Next episode we will give some other persons, no, that we will be knowing from that other teacher. Yeah, endometriosis is another webinar. But madam, we have to overrule this when the patient comes with pain in lower abdomen or pain anywhere, then we have to overrule endometriosis also while treating the patient. When it comes with a complaint of pain in abdomen, might be lower abdomen or wherever the tissue. Yes, madam. Endometriosis also, there is lower abdominal pain because of the additions. Otherwise, endometriosis alone will not giving any complaints. But with additions or with chocolate cyst, it gives pain. It's actually asymptomatic, but it gives pain with additions only. And endometriosis and PID together, we won't get the patient. PID is a different entity and endometriosis is a different entity. And with endometriosis patient where lower abdominal pain is there, means that is due to another etiology, and we have to exclude that one. But it is not a differential diagnosis with the PID. Right. Okay, madam? Right. We no need to differentiate endometriosis from PID. We have to differentiate only ectopic pregnancy. So that is entirely different topic. Only common feature is some patients complaining of pain abdomen or dyspareunia due to additions of the endometriosis. Madam, And when the patients come with the trichomonal infections, monalian and all, do you use the antifungals or use the pure Ayurvedic treatment for the treatment of these such patients of PID? Ayurvedic treatment only, madam. Thank you, ma'am. So proud of you. Thank you. Only Varti or Yoni Prakshalana, Yoni Pichu, and going on like that.
Thank you, ma'am. Madam, PID cases, if it is acute case, of course, that is not in our area. If it is acute cases like hydrosulfics and pyrosulfics cases comes to us, means we can't manage with Ayurvedic drugs. They need higher antibiotic or IV antibiotic only. Otherwise, with vasinitis and sarositis and all, we can manage with our Ayurvedic drugs. Any doubt, madam? Madam? Vandana Thank you. Patel. Thank Okay. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Okay, anyone else want to ask anything? If no question, then we can conclude. If there is no question or no suggestion, then we can conclude. Both the speakers have almost covered PID very nicely. And conclusion is that the two types of PID, acute and chronic, and area wise it is lower area and upper area, and infection wise different infections are creating PID, and complications wise is it can spread up to the fallopian tube and it can cause salpingitis and hydrosalpinx. This was the conclusion of this webinar, and we can treat the patients according to the symptoms, whether it is acute, whether it is chronic, and according to that we have to treat. But I have to add that I have seen the patients of PID, commonly the symptom is dyspareunia. The common symptom is dyspareunia in my patients. And you both have explained that laparoscopy is a gold standard, but we cannot do laparoscopy in the cases of PID. It is not an indication. I cannot advise any patient to go for laparoscopy if I am having doubt of PID. I have to diagnose clinically. And when I diagnose clinically and per PV examination, cervical motion tenderness indicates that patient is having PID. That is only clinical sign. By that sign, I can diagnose PID, and then I can advise patient to go for scan, and ultrasound scan can confirm through that there is some fluid in the pouch of Douglas, patient may have PID. And based on that symptoms. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yeah. It is given in the list of investigations, laparoscopy was given, madam. Laparoscopic diagnosis of PID also you can do. Not only we are doing only by pervasive examination is enough for us. Speculum examination, pervasive examination enough for us. Enough for us. And the next step, if after a course of douche, vaginal douche and all, if it is, then only we will send the case for the USC. Then the next step like that. It means recurrent PID is there. In such cases, you can post the patient for one laparoscopic also, because patients only knowing nowadays, they are telling that you do this one, you do Uttarvasti for me, like that patients are telling this when they come to us sometimes. Like that, they were knowing, madam, that laparoscopy is there. With laparoscopy also you can do like that. Suppose the transvaginal scanning we are telling means some patients are not liking that one, only transabdominal they are liking. In such cases, like that patients are there, no? In such cases, there is one more method is there to diagnose the PID with laparoscopy also. In any complications are there, means in such cases, madam. Otherwise, that is not the first step. Yes, it is. Okay, it madam, can continue. be last step. But in my practice, 30-35 years, I have never advised laparoscopy for the diagnosis of PID. Okay. Yes. Madam, I also not done, but it is not that. I didn't until now, madam. But it is given in the investigations list. It is given, so I told. It is given, but we never advise to never advise. We never advise even MRI. CT and MRI, so we are not advising, madam. CT and MRI. So yes is enough. Our findings only gives good idea about PID for us. Next step is only one USC if needed. But see, madam, when we advise ultrasonography to our patients, sonologists sometimes write that CT and MRI is advisable, and patients sometimes go without your consultation direct for CT, direct for MRI so many times. And they come to us with the reports of CT and MRI. So many cases, it is like that. But laparoscopy we never advise, and patient will not adopt laparoscopy for the diagnosis of PID. It is a rare condition. Yeah.
No, that will go to next step now. Within few years, they like MRI and all, they without our knowledge they are going like that. Laparoscopy. They, Without for, our knowledge, so many patients go for CT MRI. Will go, madam, will go. Yeah. That is, they feel that is convenient for them and they will go for it. Yeah, yes. That much like complications like hepatic cell cap, that capsule, liver capsule, that the attachment is a violin string attachment. In such cases, it is good, madam. We are not knowing abdominal pain, the patient complaint, we are also giving some medication and it is not reduced. In such cases, may be beneficial in future. Yeah. Even Ayurveda doctors are doing laparoscopy, madam. In future, they will do diagnose the PID with the laparoscopy. No, I don't think so. Yeah. Oh, no, madam, it will come. Madam, before our examination, PV examination, we are diagnosing the pregnancy, softness of the cervix and all. PV we can diagnose easily. Now, they are sending immediately UPT. देखिए इसमें दो चीजें हैं मैम. Yes, madam. Yes, madam. Yes, sir. There are two types of the diagnosis. First of clinical diagnosis, then the investigation. अगर आप एग्जामिनेशन और अपने हिस्ट्री ऑफ पेशेंट के द्वारा अच्छी तरह से जांच करते हैं, 70% डायग्नोसिस हो जाता है. ओके सर. बाकी के इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोसिस के लिए हैं. जरूरी नहीं है सबों को करें. अगर पेशेंट अपने पास चिल्लाता हुआ आ रहा है और आपने पीवी किया, पीवी करते हैं उसको पेशेंट को ही कैन नॉट टॉलरेट द पीवी, आप उसको डायग्नोस करते हैं, कंफर्मेशन के लिए आप लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं. वैसे तो अपने सोनोग्राफी के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा. इन्वेसिव क्यों करें? इन्वेसिव को जब करें, जब अपने अगर नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस कर सके इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, तो उससे पता चल जाएगा. जो अपने अगर क्रॉनिक हो गया, उसको निगलेक्टेड केस है, तब जाके उसके अंदर लेप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ेगी. अदरवाइज यूएसजी है, उसके बाद में सीटी स्कैन है, एमआरआई है, नॉन इन्वेसिव के द्वारा ही हो जाएगा. तो सभी पेशेंट की जरूरत नहीं. जहां पर पेशेंट निगलेक्टेड है और एकदम कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, वहां पे जाके अपने उसको करना पड़ेगा. वहां थेरापेटिक भी रहेगी साथ में. डायग्नोस्टिक है, थेरापेटिक लेप्रोस्कोपी रहेगी वहां. तो इसलिए सभी पेशेंट में जरूरत नहीं है. 70% अगर मैं मानूं 70% पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के द्वारा वी कैन डायग्नोस. बट कंफर्मेशन के लिए हमको पेशेंट भेजना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के लिए और फर्दर अपने रेडियोलॉजी के लिए. ये मेरा मानना है. Now we can say Agnihotri sir for conclusion. Thank you, ma'am. Thank you so much. First of all, I would like to thank all the persons who took participation in the discussion and they made the topic vital. Apart from the presentation of our guest speaker, because had they not involved in this sort of open discussion, we would have not gone to that depth of the knowledge. So, thank you. All the panelists, along with their participants who put their small query, is really appreciable. I am not making any question. It's a very small query. It may be the most silly query, I think. Mostly, all the learned persons are here on a platform. It may be laughable, but since it is coming in my mind, and you dignitaries may not be so easily available to us. What we see that neither Acharya Shushruta, Acharya Charak, Acharya Bhagwat, even Acharya Kashyap, they were not having this type of direct source of females information. And so goes the case with Acharya Sharangdhar, Madhavkarji and Bhav Mishraji. Means both the Bhrattrayi and Laguttrayi, they were done. Even I'm scared to say that their disciples were also all male. But how scientific, how deep knowledge they talked about the Yoni Vapat or each and everything apart, along with the anatomy. This is what the Divya Gyan, the Dushu Gyan Chakshusha, I should say in that way. Otherwise, even the dummy was not there. The LS section of the pelvis was not there, as we saw in our BHU and everywhere. So, lack of models, lack of anything, lack of microscope, and they're talking the thing that the modern medicine tools and materials can keep on talking years together, not hours together. So this is what their vision was. So anybody can tell me that how they got that much of knowledge belonging to the female body and female diseases. Anyway, it's just a lighter note. The knowledge cannot be escalated by any of the parameter, any of the inchi tape, any of the parameter. So thank you so much. I extend my
great thanks to both the speakers, especially pelvic inflammatory disease, a very wide and very common one. She who suffers may understand better. The situation is this: they have to attend clinic repeatedly and go for the investigations repeatedly, and whatever the instructions given by the attending physicians, she has to follow. So I congratulate Vaishali and the new bud, and the senior most our Ramadevi ji is equally authoritatively touched all the areas of this session. At the same time, Ajahn Ramvirji is the only person, I think he comes as a male to talk about on these issues, and this is really a over personality work. So I thank Professor Ramvirji also, and all the dignitaries, all the participants who participated and made the whole discussion and the topic vital, along with, after all, our Professor Kamini Dhimanji. Thanks to Professor Pawan Sharma ji for making this webinar possible and learnable to us all. Thank you so much. I think Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Good I night. think, Night 2 to and 15 minutes, 2 hours and 15 minutes. A great long. Yes, yes, it was longest webinar of our the one webinar itself. series. Yeah, One longest. webinar took. Yeah. Yes. Thank you so much.